In this one, we are quickly brushing up our merger concept. Then we'll do the questions relating to merger. तो सबसे पहले देखो merger को conceptually समझना तो ज़रूरी है. Then only we will solve the question in a more effective manner. Merger acquisition and corporate restructuring. Merger acquisition and corporate structuring को सर ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था. सबसे फर्स्ट पार्ट जो था दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. उसमें मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, बेसिक्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन. तो ये तो बस इंट्रोडक्शन. देन आता है हमारा merger and acquisition through share offers, number of equity shares which is to be issued to shareholder of target company, post merger book value, post merger earnings, post merger market value, impact of merger, value of original shareholders, maximum exchange ratio, minimum exchange ratio, merger and acquisition through cash offer. इसमें cash to be paid to shareholders of target company, post merger book value, post merger earnings, post merger market value, impact of merger, maximum exchange ratio, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो. देखो इसे हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं, बाकी सारा तो हमें क्वेश्चन करते टाइम और ज़्यादा क्लैरिटी से आने लगेगा. उसके बाद अदर कैलकुलेशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन. इसके बाद हम मर्जर का जो क्वेश्चन है मई 2026 वो भी सॉल्व करेंगे बिकॉज सजेस्टेड आंसर भी रिलीज हो चुके हैं. उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, डी मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक स्प्लिटअप, बोनस इशू, इक्विटी, बायबैक, ये सारा हमारा हो जाएगा. उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. तो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे पास क्या क्या आएगा, दैट ऑल विल इंक्लूड meaning of corporate restructuring. It is a process of reorganizing company's operation to improve its efficiency by following ways. Type of corporate restructuring क्या है, merger and acquisition, then demerger, then reconstruction, financial restructuring, stock split up, बोनस इशू एंड इक्विटी, बायबैक, ऑनरशिप, रीस्ट्रक्चरिंग. तो देखो सबसे पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन टू मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग कंपनीज ऑपरेशन. ये क्या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रीऑर्गेनाइज करेंगे कंपनी के ऑपरेशंस को टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे बाय फॉलोइंग वेज. टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मर्जर एंड एक्विजिशन, देन कुछ क्वेश्चन डी मर्जर से भी रिलेटेड होंगे, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, स्टॉक स्प्लिटअप. स्टॉक स्प्लिटअप लाइक आप शेयर्स को क्या है कि डिवाइड कर रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो, इट स्प्लिट अप. एंड बोनस इशू, इक्विटी, बायबैक, ओनरशिप, रीस्ट्रक्चरिंग. उसके बाद वी विल रीड बेसिक्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन में मीनिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन. इट अकर्स व्हेन वन कंपनी बायज अनदर कंपनी. एक कंपनी दूसरी को खरीदती है. टारगेट कंपनी और एक्वायरर जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो वीक कंपनी को खरीदती है. यूनिफिकेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन करती है. परचेजिंग कंपनी इज नोन एज एक्वायरर. जो कंपनी परचेज करती है दैट द कंपनी इज एक्वायरर. एंड सेलिंग कंपनी को हम वी नो इट बाय द नेम दैट इज target. Target company will cease to exist after merger. Consideration to shareholder of target company can be discharged by issuing equity shares of acquirer company shares offer by paying cash offer. देन आता है हमारे पास, देन कम्स दी प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग इन अ कंपनी. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन अ कंपनी कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज हेल्ड बाय प्रमोटर्स प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय नॉन प्रमोटर माइनॉरिटी होल्डर्स. अब प्रमोटर होल्डिंग का परसेंटेज क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज हेल्ड बाय प्रमोटर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन अ कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड अगर नॉन प्रमोटर होल्डिंग निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, हम सिंपली नॉन प्रमोटर, इफ़ वी नीड टू कंप्यूट दी नॉन प्रमोटर होल्डिंग, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच इज हेल्ड बाय नॉन प्रमोटर ने कितना शेयर रखा है एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन अ कंपनी. तो टोटल में तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन अ कंपनी, प्रमोटर वाले में प्रमोटर, नॉन प्रमोटर वाले में नॉन प्रमोटर. फिर आता है हमारे पास देन कम्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स बोथ प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स. Market capitalization consists of all equity shareholder where it includes promoter as well as non-promoters. Market price of shares multiply number of equity shares outstanding in a company or equity share earning attributable to equity shareholder multiply PE ratio. Free float market capitalization is a market value of non-promoters equity shareholder market price of shares multiply number of equity shares held by non-promoter. उसके बाद हमें पढ़ना है मर्जर एक्विजिशन थ्रू शेयर्स ऑफर्स. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरर टू बी इशू टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट.
कैलकुलेट करना एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो. एक्सचेंज रेशियो कैन बी बेस्ड ऑन पॉजिटिव पैरामीटर. इफ इट इज पॉजिटिव पैरामीटर तो कैसे एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं कि टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरर. और नेगेटिव पैरामीटर वाले केस में हम क्या करते हैं, एक्वायरर बाय पैरामीटर ऑफ टारगेट. If exchange ratio is to be calculated using more than one parameter, then weighted exchange ratio is calculated by applying the weight to each exchange ratio arrived by using a parameter as follows. Exchange ratio कैसे निकालते हैं? Exchange ratio 1 multiply weight plus multiply weight of 2 plus exchange ratio and so on. Number of equity share outstanding acquirer company target company calculate the exchange ratio on the basis of MPS. से इस तरीके से हम निकाल देते हैं. तो ये वाला पार्ट तो समहाउ इजी है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर एक्वायरर कंपनी टू बी इशू टू शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी. तो नंबर ऑफ और एक्सचेंज रेशियो, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन टारगेट कंपनी प्री मर्जर एंड एक्सचेंज रेशियो दैट इज, देखिए इसमें क्या हो रहा है सिंपली, that is we need to calculate number of equity shares of acquirer company to be issued to shareholders of target company and number of equity share outstanding in target company pre merger and exchange ratio. ये सारा आ जाएगा. उसके बाद sometimes amount of consideration to be discharged to shareholders of target company is given in question, then number of equity share of acquirer company to be issued to shareholders of target company are calculated as follow. Amount of consideration divided by market price of shares and MPSA is what? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्री मर्जर. एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू टू शेयर होल्डर ऑफ टारगेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन टारगेट प्री मर्जर. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन मर्ज एंटिटी इज, ये से निकल जाएगा कि हमारे पास पहले कितने थे एंड नंबर ऑफ टारगेट के कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर के कितने हैं, नंबर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेशियो. तो वी विल गेट दी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन अ मर्ज एंटिटी. उसके बाद वी विल गेट दी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन एक्वायरर कंपनी प्री मर्जर, प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज इन मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर इन एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू टू प्रमोटर ऑफ टारगेट डिवाइड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द मर्ज एंटिटी कितना है एंड वी विल सिंपली गेट दिस. देन पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू शेयर कैपिटल. तो हमारे पास कितना पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ एक्वायरर प्लस रिजर्व ऑफ एक्वायरर कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ टारगेट. वी विल सिंपली गेट द कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ टारगेट बुक वैल्यू ऑफ टारगेट माइनस दिस मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर. ये हो जाएगा. उसके बाद वी विल गेट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर्स पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इन अ मर्ज एंटिटी. बुक वैल्यू पर शेयर्स कैसे निकालेंगे? पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू जितना भी आएगा, देखो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे? जो भी आपका पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू है डिवाइड बाय बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, यू नो बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर. तो बुक वैल्यू निकालने का ये तरीका है. सबसे पहले शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर. ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो होता है. जब आप क्वेश्चन करोगे तो यू विल कम टू नो इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एक्वायरर प्लस कैपिटल रिजर्व ऑफ एक्विजिशन ऑफ बुक वैल्यू माइनस टारगेट कंपनी के शेयर्स मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर. तो इस तरीके से ये थोड़ा इसी पैटर्न में निकलता है में से. उसके बाद पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी बुक वैल्यू पर शेयर्स पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी. उसके बाद वी हैव टू डू पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर मर्जर. पोस्ट मर्जर अर्निंग is just a minute, give me one
this post-merger earning. Post-merger earning of merger, post-merger earning of acquirer plus earning of target plus synergy and earning of Fanny, earning post-merger earning attributable to shareholders of merged entity, earning attributable to shareholders of acquired company pre-merger, earning of target company, post-merger earning per share, EPS after this, तो earning after and जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है ये पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर्स इफ पी रेशियो ऑफ मर्ज एंटिटीज गिवन इन क्वेश्चन MPS 80 EPS 80 multiply P ratio of merged entity MPS 80 post merger MPS of merged entity if P ratio of merged entity is not given in question, then VA plus VT plus synergy in market value of NA plus NAT. VA is market capitalization of acquirer, pre-merger or calculated using valuation approach, market capitalization of target, pre-merger or calculated using valuation approach. These are the question which you get only after doing the questions. So theoretically you will not get what I am exactly telling. Market capitalization of acquirer pre-merger or calculated using valuation approach. Market capitalization of target pre-merger or calculated using valuation approach. Synergy in market value will be the PV of future gains or savings. Post-merger market value, market capitalization is what? So that is VAT MPS जो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर है आफ्टर द मर्ज एंटिटी ऑफ द मर्ज एंटिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स of merged entity. So you will get market capitalization. VAT is a post merger market capitalization, market value of merged entity. Then what will be the impact effect of a merge for the shareholders? Gain loss to shareholder from merger, benefit profit to shareholder from merger. Are shareholder better or worse off than before merger accretion dilution due to merger? उसके बाद on the basis of EPS what we will get is post merger EPS to EPS 80 equivalent EPS post merger EPS multiply exchange ratio EPS 80 multiply exchange ratio minus pre merger EPS that is EPS of acquisition and target gain loss per share number of equity shares outstanding pre merger and you will get the total gain loss to shareholders EPS of pre merger EPS of target pre merger. Then on the basis of MPS, post-merger MPS, equivalent MPS, post-merger MPS multiply exchange ratio minus pre-merger MPS. Gain loss per shares, number of equity shares outstanding pre-merger, total gain loss to shareholder. MPS A, MPS of acquired pre-merger, MPS T, MPS of target pre-merger. उसके अलावा we need to cover more things too. In silent situation calculation of MPS total gain from merger acquisition total gain loss to shareholder if acquired on the basis of MPS plus total gain loss to shareholder of target on the basis of MPS. True cost of merger will be the net cost of acquisition or cost of takeover total gain loss to shareholder of target on the basis of MPS. Value of original shareholder. It means value of shareholders of acquirer and target in the merged entity if there is no synergy in market value. Steps to be followed to calculate the value of original shareholder. Calculate value per share of original shareholder in merged entity VA plus VT plus divide by NAT. Calculate value of original shareholders of acquirer value per share step 1. Then what will be the share? We need to calculate the value of original shareholder of acquirer value per share step number 1 and A. Then shareholder of target value per share step 1 to number of shares of a target multiply exchange ratio and then we will get maximum exchange ratio acceptable to acquirer company. It means maximum exchange ratio that acquirer can offer without dilution of its EPS or MPS to the shareholders of target. It is calculated as follow. Maximum exchange ratio without dilution of EPS. Acquirer want to maintain same EPS in merged entity as before merger. Post merger EPS will be pre merger EPS of acquirer earning after this NIT EPS. So earning of merged entity divided by NA plus NT multiply exchange ratio. In this formula exchange ratio is calculated as balancing figure. उसके बाद we have to cover
Maximum exchange ratio without dilution of MPS. Acquirer want to maintain same MPS in a merged entity as before merger, post-merger MPS, pre-merger MPS of acquirer. If P ratio of merged entity is given in question, EPS ET multiply P ratio of merged entity MPS A. EAT divided by NAT multiply P ratio of merged entity MPS A. EAT multiply P ratio of merged entity divided by NA plus NT multiply exchange ratio MPS A. If P ratio of merged entity is not given in question, VA plus VT plus synergy in market value of NA divided by NAT equals to MPS A. VA plus VT plus synergy in market value of NA plus this MPS A. In this formula, exchange ratio is calculated as a balancing figure. In silent situation, calculate maximum exchange ratio without dilution of MPs. Minimum exchange ratio acceptable to target company. It means minimum exchange ratio that shareholders of target can accept without dilution of its NPS or EPS. It is calculated as follow: minimum exchange ratio without dilution of EPS. Target want to maintain same EPS in merged entity as before merger. Equivalent EPS AT multiply exchange ratio pre-merger EPS of target EAT divided by NAT multiply exchange ratio EPS T. Earning after tax divided by NA plus NT multiply exchange ratio, you will get EPS at T. In this formula, exchange ratio is calculated as balancing figure. उसके बाद we need to cover the minimum exchange ratio without dilution of MPS. Target want to maintain same MPS in a merged entity as before. Equivalent MPS AT multiply exchange ratio. Pre-merger MPS of a target company. P ratio of a merged entity is given in a question. Then EPS AT multiply P ratio of merged entity multiply exchange ratio MPS T. EAT divided by NAT multiply P ratio of merged entity multiply ER MPS AT. EAT multiply P ratio of merged entity divided by this multiply exchange ratio, we will get this. If P ratio of merged entity is not given in question, VA plus VT plus synergy in a market value of NA divided by NAT multiply exchange ratio MPS VA plus VT plus synergy in market value of NA divided by NA plus NT multiply exchange ratio is equals to MPS T. And this formula exchange ratio is calculated as balancing figure. In silent situation, we need to calculate the minimum exchange ratio without dilution of MPS. Merger and acquisition through cash offer. Cash to be paid to shareholders of target company, it is calculated as follow: cash per share multiply number of target company in cash. In case of cash offer, number of equity share outstanding in merged entity will be equal to the number of equity share outstanding in acquired company, since no shares are issued to shareholder of target company. उसके बाद we need to read the merger book value after merger. Post merger book value share capital, so that is the number of shares of acquirer multiply face value per share of acquirer plus reserve of acquirer, capital reserve and acquisition of target. Here capital reserve and acquisition of target कैसे निकालोगे आप? तो बुक वैल्यू जो भी होगा आपका टारगेट का, बुक वैल्यू कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करके माइनस कैश पर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट को डिडक्ट करना एंड यू विल गेट द सेम कैपिटल रिजर्व एंड एक्विजिशन ऑफ टारगेट. Post merger book value per share, that is book value per shares of the AT, that is after merge entity, book value per share of merge entity. Post merger book value divided by NA. Post merger earning after merger, post merger earning, that is earning after tax. You will get the earning of acquirer plus earning of target plus synergy in earnings if any minus cash per shares multiply number of shares of a target company multiply interest rate multiply 1 minus tax rate. So if it is, this is post merger earning cash per shares, ये हम ये उस केस में करते हैं जब we do not have, जब हम बदले में शेयर्स नहीं इशू कर रहे, बदले में कैश दे रहे हैं. पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर्स EPS आफ्टर टैक्स, तो EAT डिवाइड बाय NA. पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर्स. इफ P रेशियो ऑफ मर्ज एंटिटी इज गिवन इन क्वेश्चन, MPS AT EPS AT मल्टीप्लाई P रेशियो of merged entity. If P ratio of merged entity is not given in question, then MPS AT VA plus T plus synergy in market value of NA minus cash per share multiply NT divided by NA. Post merger market value will be the value after value of merged entity. तो MPS AT multiply NA. then आता है हमारे इसके बाद
इम्पैक्ट इफेक्ट क्या होगा? मर्जर फॉर द शेयर होल्डर्स और गेन लॉस टू शेयर होल्डर फ्रॉम मर्जर, बेनिफिट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर फ्रॉम मर्जर, आर शेयर होल्डर बेटर और वर्स ऑफ देन बिफोर मर्जर, एक्रीशन डाइल्यूशन ड्यू टू मर्जर. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो एक्वायरर और टारगेट. पोस्ट मर्जर एमपीएस क्या? एमपीएस आफ्टर एमपीएस ऑफ द मर्ज एंटिटी और कैश पर शेयर्स. Cash paid per share minus pre-merger MPS, so you will get the gain loss per shares multiply number of equity share outstanding pre-merger, you will get the total gain loss to shareholders. True cost of merger, net cost of acquisition और cost of takeover, total gain loss to shareholder of target कितना है? Maximum cash per share acceptable to acquirer company, it means maximum cash price per share that acquirer can offer without dilution of its EPS or MPS to the shareholders of target. It is calculated as follow: maximum cash per share without dilution of EPS. Acquirer want to maintain same EPS in merged entity as before merger. Post merger क्या? तो वी वर एट इम्पैक्ट इफेक्ट. कहाँ थे हम एग्जैक्टली? इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ मर्जर फॉर द शेयर होल्डर, गेन लॉस टू शेयर होल्डर फ्रॉम मर्जर, बेनिफिट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर फ्रॉम मर्जर, आई शेयर होल्डर बेटर और वर्स ऑफ देन बिफोर मर्जर, एक्रीशन डाइल्यूशन टू मर्जर. It is calculated as follow: acquirer target post merger MPS, MPS 80 cash per share, MPS T, MPS A. Then gain loss per shares, number of equity shares outstanding pre merger, total gain loss to shareholder. True cost of merger, net cost of acquisition or cost of take over, total gain loss to shareholders of target. Maximum cash per share acceptable to acquirer company means maximum cash price per share that the acquirer can offer without dilution of its EPS or MPS to the shareholders of target. It is calculated as follow: maximum cash per share without dilution of EPS. Acquirer want to maintain same EPS in a merged entity as before merger. Post merger EPS, pre merger EPS of acquirer, earning after tax divided by NA is equals to EPS A. उसके बाद ये प्लस अर्निंग ऑफ एक्वायरर प्लस टारगेट प्लस सिनर्जी इन अर्निंग इफ एनी कैश पर शेयर माइनस कैश पर शेयर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ. In this formula, cash per share figure maximum cash per share without dilution of MPS. Acquirer want to maintain MPS in a merged entity as before merger. Post merger MPS after tax, pre merger MPS of acquirer. If P ratio of merged entity is given in question, EPS 80 multiply P ratio of merged entity, you will get the MPS of acquirer. Earning after tax divided by NA multiply P ratio of merged entity, MPS E.
earning of no acquirer plus earning of target plus synergy in earning if any minus cash per share, number of shares of target multiply interest rate, percentage multiply 1 minus tax rate, P ratio of merged entity divided by uh, number of acquirer shares is equals to MPS of acquirer. If P ratio of merged entity is not given, then value of acquirer plus value of target plus synergy in value. अगर P ratio नहीं दिया है तो P ratio दिया है तो उस तरीके से, नहीं दिया है तो synergy minus cash per shares multiply number of shares of target divided by number of acquirer के shares, you will get the MPS of acquirer. तो ये थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. इन दिस फार्मूला कैश पर शेयर इज कैलकुलेटेड एज बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे जो है हमें कैश एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है कंप्यूट करना होगा. उसके बाद वी हैव इन साइलेंट सिचुएशन कैलकुलेट मैक्सिमम कैश पर शेयर विदाउट डायलेशन ऑफ एमपीएस मिनिमम कैश पर शेयर एक्सेप्टेबल टू टारगेट कंपनी. इट मीन्स मिनिमम कैश प्राइस per share that is shareholders of target can accept. It is calculated as follow: pre-merger MPS of target plus loss of remuneration per share to shareholders of target if any. उसके बाद other calculation in merger and acquisition. Value of acquisition, it means addition in value of acquirer after acquisition of target. Value of acquisition is value of merged entity minus value of acquirer. Financial visibility of acquisition, it is calculated as follow: PV of cash inflow from target company after acquisition minus net outflow at the beginning to acquire the target company and PV. Here net outflow of beginning to acquire the target company, value of entity shares issued by acquirer, number of shares issued multiply market price of shares of acquirer, amount of debenture issued by acquirer, external liability, current liability, settlement amount minus amount realized from asset of target, debtor, inventory and cash. Advice on financial feasibility of acquisition: if NPV is positive, acquisition is advantageous. If NPV is negative, acquisition is not advantageous. ठीक है. इसके बाद पार्ट 4 में we need to cover पार्ट 5 में we need to cover other types of corporate restructuring like demerger. Meaning of demerger: it is an arrangement where some part division of a company, demerged company, is sold to another company, resulting company laptop division, mobile division, or this generally resulting company issue equity shares to existing shareholder of demerged company spin-off. Effect of demerger: asset and liability of sold division in merged company are transferred to resulting company, and hence only asset and liability related to unsold division remains in demerged company. Number of equity share outstanding in demerged company will remain same after demerger reconstruction and financial restructuring. Steps to be followed to calculate impact of financial restructuring: calculate benefit from restructuring, then reduction in equity share capital plus reduction in preference share capital plus waiver forego of debt claims, debenture interest, accrued debenture, trade creditor, appreciation in value of assets, upward revaluation in fixed assets. उसके बाद तो वी हैव कितना पढ़ा है मर्जर का कंसेप्चुअल चैप्टर भी. आई नो कि क्वेश्चन करने से ही बात बनेगी, बट फिर भी आई एम doing a quick recap of the concept to the extent I can before moving to questions. Then also I have to look at again while doing solving sums or calculate amount utilized out of above benefit, write off fictitious asset, preliminary expenses, cost of issue of debenture, write off debit balance of P&L, loss in P&L, creation of provision for bad debt, write down in asset, downward revaluation in fixed asset, calculate capital reserve, step 1 minus 2. Then comes the stock split. What is stock split? Basically, it is a process in which the company increases the number of equity shares outstanding by decreasing the face value. कम कर देगी, but the total amount of share capital तो same रहने वाला है after split up भी. The number of equity share outstanding after split up, existing amount of share capital, new face value per share after split up. Bonus issue. Meaning of bonus issue: it is a process in which the shares are issued to existing shareholder without any consideration by capitalization of reserve. Bonus share will be 1:4. It means 1 bonus shares for every 4 existing shares. Effect of bonus issue: number of equity share outstanding will increase after bonus issue. Number of equity share outstanding after bonus. Number of equity shares outstanding before bonus. Bonus shares amount of share capital will also increase after bonus issue. Amount of share capital after bonus. Number of equity shares outstanding after bonus multiply the face value per share.
उसके बाद अमाउंट ऑफ रिजर्व विल डिक्रीज आफ्टर बोनस इशू सिंस बोनस इशू इज मेड आउट ऑफ रिजर्व. अमाउंट ऑफ रिजर्व आफ्टर बोनस इशू, अमाउंट ऑफ रिजर्व बिफोर बोनस माइनस बोनस shares multiply face value per shares. EPS after bonus issue, earning attributable to equity shareholder before bonus, number of equity shares outstanding after bonus. MPS after bonus issue will be EPS after bonus issue multiply P ratio. Market capitalization after bonus issue will be MPS after bonus issue multiply number of equity share outstanding after bonus issue. Equity buyback or share repurchase, ownership restructuring. Meaning of equity buyback: it is a process in which company buys its own equity shares from the market to reduce the number of equity shares outstanding. Buyback price at which shares are bought back is generally at a premium over current market price of a share. Buyback price per share will be the current market price plus buyback premium per share. Total amount required for buyback will be the number of equity shares bought back multiply the bought back price per shares. What will be the effect of equity buyback? Number of equity shares outstanding after buyback, number of equity share outstanding before buyback minus number of equity shares bought back. EPS after buyback will be the earning attributable to equity shareholder before buyback minus interest on loan taken for buyback multiply 1 minus tax rate number of equity share outstanding after buyback. Interest on loan taken for buyback, total amount required for buyback, interest loan rate this. MPS after buyback, EPS after buyback multiply P ratio. Market capitalization after buyback, MPS after buyback, number of equity shares outstanding after buyback. उसके बाद we need to cover so this are the chapter of these are simply the concept of this chapter, that is merger acquisition and corporate restructuring. Let me bring study material of merger. So I will share a detailed analysis. Wait for a while.
देखिए मेरा मॉड्यूल न्यू तो नहीं है, मैं 31 तो हमारे पास TY के क्वेश्चंस है। तो वैसे तो आई हैव फैकल्टी क्वेश्चन बैंक, बट आई एम थिंकिंग कि आई विल क्रॉस वेरीफाई बोथ एट द सेम टाइम। तो वी हैव 31 इन दी TYQ एंड उसके अलावा कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह है। तो we will solve each and every question. We will try to figure out what expected question can be drafted by institute as well for the merger chapter. तो merger chapter में I will allocate proper sufficient time. I have no hurry to complete the merger chapter and to switch to another chapter and another and pick another. No, I have I give myself sufficient time, adequate time for mother acquisition, because this is one of the chapter where I feel very lazy to do. But I will try to complete it in a more appropriate manner rather than doing just for sake of doing. I will solve the May 26 question as well, and already suggested a release by the institute nowadays. We will cover mother chapter in the next update.